So just give me a minute. Let me open up the presentation. Okay, we have the question on the screen now. The question says, a vessel steering a course of 050 compass observed old head of Kinsale light. The position of the light is given to us. Beta, I hope the video, audio, everything is clear. The question number 1 of our assignment, beta. We will discuss number 1, then we will discuss number 4. 2 questions I am going to show you here. Usually in MMD question papers, the position of all the reference objects is provided to us. This is basically for the identification purpose, so that you can quickly and easily identify that particular object. So it does not matter whether you are familiar or not familiar with the chart. So using these coordinates, you will be able to identify the objects very quickly. So old head of Kinsale light is bearing 350 compass. The distance from the light is 4 miles, and this was at 2000 hours. So basically, if you see, they have given us a position or a fix at 2000 hours. This information which is provided to us here is enough to plot or find out the 2000 hours fix. Now, Beta, other people can mute their mics. Karan? Karan, beta, you can mute your mic. Karan seems busy. Okay, let's continue. Now, at what time and position would belly cotton light, again the position of belly cotton light is provided. So at what time and position would this belly cotton light be abeam on port side if the current was known to be setting southeasterly at 3.5 knots? So there is current in the area. The set and drift of the current is given to us. Let's now open up the chart and have a look at this area. So we have the chart on the screen now. Now, first of all, let's identify these two objects which are given to us. The first one is old head of Kinsale. Now, the old head of Kinsale is at this particular location. See, I have highlighted it. So this is the first lighthouse. The second light which is mentioned here is the belly cotton light. The belly cotton light is in this particular location here. So again, it is highlighted. Beta, all these assignments which I will be giving you, total 6 assignments are there for chart work. They are all based on chart number 5048. So all questions are based on 5048. Once we complete them, then we can move on to other charts also. So the idea is to have the clarity of the concepts. Then once the concepts are clear, you can move on to any of the charts and solve these questions. So these are the two objects which we will be using to plot in this question.
So we will see now how the question is to be attempted, what all markings are to be made on the chart, how the plot of a chart work question is done. Now, the vessel is steering a course of 050 compass, so we know what is the ship's head. The bearing of old head of Kinsale light is given to us as 350 compass. Now, if we want to plot this bearing on the chart, we have to convert it to true bearing. Compass bearings are never plotted on the chart. What we plot on the chart are always true bearing and true courses. So to convert this to true bearing, we need to know what is the compass error. So compass error can be found by a combination of deviation and variation. So what we will do is, with the ship's head 050 compass, we will enter into the deviation card, and the deviation card would give us the deviation for this particular ship's head. The variation is given to us in the question paper itself. So whatever variation is given is picked up. We combine these two. By combine, I mean if deviation and variation are of the same sign, they are added up and the sign is retained. And if deviation and variation are of the opposite signs, then we do bigger minus smaller and we retain the name of the bigger one. That gives us the compass error. So we apply this compass error to our compass bearing. That will give us the true bearing of this particular lighthouse. So once you have the true bearing, we are now going to plot this true bearing on the chart. So we have the old head of Kinsale lighthouse here. Let's plot the true bearing. You can see the true bearing plotted on the chart. So this is our first position line at 2000 hours. Now they have given us that the vessel is at a distance of 4 miles from this lighthouse. So we open up our compass, a distance of 4 miles from the latitude scale. You open up your compass, center your compass at the lighthouse, old head of Kinsale, and make an arc. So let's make the arc. So you can see this arc here, centered at old head of Kinsale, the radius equal to distance of, which is 4 miles. Wherever this arc cuts your bearing line, that's the position of the ship. So let's mark the position. The position or fix is marked with a circle and dot in the center. So we have drawn the circle on the chart now. This is our 2000 fix. So let's write the time also. So we have the 2000 time mentioned here. For easy understanding, let's name this point. Let's name this point as point A. So this is our initial fix at 2000 hours. Now the second thing which we pick up from the question is that the vessel is steering 050 compass. We have already obtained the compass error, so we apply this compass error to the course and we get the true course steered. The engine speed of the ship is also given to us in the question paper in the notes. In our assignments, we have used a speed of 12 knots. So using a speed of 12 knots and the true course obtained from here, we can now draw our CTS vector, the course steered vector. So starting from point A, I am going to mark off my CTS vector, that is course steered vector, for a period of 1 hour. So let's mark off our CTS vector. So you can see this dark blue color vector here. The direction of the vector is our true course and the length of the vector is
the distance traveled by the ship, covered by engines in 1 hour, that is 12 miles. CTS vector is represented or marked with a single arrow. So we have marked a single arrow here. Now the point where the CTS vector ends, let's name this point as B, Bravo point. So AB represents our course steered vector for a duration of 1 hour. Now the next thing which I am going to pick up from the question is the current. We know the current is setting southeasterly. So this is the direction in which the current is taking us. And we know the rate is 3.5 knots. So now from point B, I'm going to mark or draw my current vector again for 1 hour. So from point B in the southeasterly direction, I'm going to draw the current. Let's plot it on the chart. You see the current vector plotted on the chart for a duration of 1 hour. In 1 hour, the current is going to drift us by 3.5 miles. The current vector is represented by 3 arrows. So let's mark it off. We have these 3 arrows on the current vector. The point where the current vector ends, let's name that point as C, Charlie point. So Bravo to Charlie, B to C gives us the current vector for 1 hour. Now if I join Alpha to Charlie, that would complete my course distance and current vector triangle. So I'm going to join Alpha with Charlie. So I have joined Alpha to Charlie and I have extended this line further. Now we know this Alpha to Charlie is the resultant of our CTS vector and the current vector. So this Alpha to Charlie is our course made good vector. The resultant of CTS and current vector is the CMG vector. So this is our course made good. Course made good is represented by double arrows. So let's mark off these double arrows on the chart. Alpha to Charlie is our course made good and distance made good for a duration of 1 hour. Now our course, distance and current vector triangle is complete. Alpha to Bravo is the CTS vector or course steered vector. Bravo to Charlie is the current vector and Alpha to Charlie is the course made good and distance made good vector. Now we can easily find out our speed made good also. So we measure off this distance Alpha to Charlie. Now this is the distance which the vessel is going to make good in a period of 1 hour. So this also gives us our speed made good. Whatever distance you measure Alpha to Charlie will be the speed made good of the ship when it is moving on this particular track. So vessel will be steering or maintaining its heading in the direction of AB, our CTS vector, but vessel will be proceeding along the Alpha to Charlie AC vector. Okay, so now the next thing which the question asks us is, at what time and position would belly cotton light be abeam on the port side? Now here one important thing which we need to be clear in our mind is that a beam bearing is always calculated or found with reference to our course steered. So
whatever course we are steering, plus 90 degrees or minus 90 degrees gives us the beam bearing. If something is on the starboard side, you will have to add 90 degrees to your course steered to get that beam bearing. And if something is on the port side, you will have to subtract 90 degrees to get your beam bearing. So be clear in the mind that the beam bearing or a object coming abeam will happen when it is at 90 degrees to our course steered. So since we know our course steered, we can also find out the beam bearing of the belly cotton light. So whatever course steered we got, minus 90 degrees would give us the beam bearing of the belly cotton light. So first of all, we will plot that beam bearing here. So beam bearing is at 90 degree to the course steered. I have plotted the beam bearing on the chart. So you can see clearly this beam bearing is perpendicular to my CTS vector. It may not be perpendicular to the course made good line or course made good vector. So you see the course made good vector which we have, AC line extended. Now the beam bearing is not at right angles to this line. So wherever these two intersect, that is our course made good extended and the beam bearing, let's name that point as delta. So we see this delta point here. Once we have this delta point, we can now easily calculate our ETA, as well as we can read off the position when the belly cotton light would be abeam. So you can read off this position, latitude and longitude from the chart. Now to calculate the ETA, we have already found out what is our speed made good. From this 1 hour vector triangle, the speed made good is already known. Now we measure off the distance alpha to delta on the chart. This distance alpha to delta divided by our speed made good will immediately give us the time which the ship would require to reach point D. So alpha to delta distance divided by the speed made good will give us the time after which the vessel will be at the delta point. So whatever duration you get, add it to 2000 hours and you will get your ETA when the belly cotton light would be abeam. So ETA as well as the position has been obtained now, and this completes the question. So you can see what all things have been mentioned here in the plot. We have suitably made all the markings. The CTS is represented by single arrow, current represented by 3 arrows, CMG by 2 arrows. The bearing lines are represented by arrows. The position has been represented by a circle. So all these markings have been made on the chart. So this basically completes our question. Okay, so beta, this was question number 1. So any doubts or queries in your mind related to this question, what we have done on the chart, anything? Okay, so I take silence that it is pretty clear in the mind. Yes, sir, everything clear. Clear, Oh, clear, sir. Everything. very good, beta. Very good. So then let's move on to question number 4, beta. The question number 4 of our assignment. So let's see it now. You are now familiar with how the plot is to be done, what all markings are to be made, how to approach a question. So in this question, we have allowed for the current.
So allowing for the current has been practiced. All these things have been practiced. So let's now move on to number 4. Okay, let's move on to the next question. We have the question on the screen now. A vessel in DR position 51 degrees 30 minutes north, 007 degrees 30 minute west observes star X with an azimuth of 050 degrees true and an intercept of 2 miles away, and star Y azimuth of 130 degrees true and an intercept of 3 miles towards. So basically we have the DR position and they have given us 2 celestial observations here. So this is enough for us to find out our position, the observed position of the ship. Everybody remembers beta, how did we plot the intercept PL, celestial PL जब हमने किया था? Everybody remembers? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, very good. So we will use that here. So that is the first thing which needs to be done. Find the ship's position. From the above position, it is required to make good a course to reach a position 3 miles due south of Old Head of Kinsale. The current is estimated to set 145 at a rate of 2 knots. So this is the second thing which is required. We need to find out what course should we be steering so that we reach at this particular position, 3 miles due south of Old Head of Kinsale. Now, after running for 2.5 hours, a fix was obtained, and that fix was 5130 north and 008 degrees 30 minute west. Find the true set and drift of the current. Now you see the set and drift which is given to us in the question is the estimated set and drift. It is the estimated current. Now, once we have obtained a fix after moving for 2.5 hours, with this we can now find out whether this estimation was right or wrong, or we can find out what was the actual set and drift of the current. So how do we do this? Let's open up the chart. We have the chart of the area on our screen now. So let's first of all plot the DR position. So 5130 north and 730 west. So you can see the DR position plotted here on the chart, marked with a cross. Now the first observation is of star X, azimuth is 050 and intercept is 2 miles away. So let's mark off the azimuth of 050. We have the 050 azimuth here. Since the intercept is 2 miles away, I will be going away from the star. Starting from my DR position, I will be going away from the star, means opposite to the direction in which the star is, or opposite to the azimuth of the star. And I will be moving a distance of 2 miles. That's how a intercept site is plotted. So starting from the DR position, moving away from the star, a distance of 2 miles, I reach to a point. This point is known as the ITP, which is intercept terminal point. Now this is the point from where the PL passes, and the direction of the PL is always perpendicular to the azimuth of the body.
So let's draw the PL here. You can see the PL now passing from the ITP and perpendicular to the azimuth. This is our first position line plotted on the chart. The second PL obtained from star Y. Azimuth is given as 130. So let's mark off this azimuth on the chart. So from the DR position, I mark off my azimuth of 130. We have the azimuth plotted here. The intercept is 3 miles towards. So from the DR position, I go towards the star or in the direction of the azimuth, a distance of 3 miles. And this is where my ITP is. So once the ITP is located, we can draw the position line now. Position line passes through the ITP and is perpendicular to the azimuth of the body. So let's plot the PL. We have the PL, the second PL plotted on the chart now. Now the point where both these position lines intersect is our position. So let's mark off our position. The position is marked by a circle. So we have the circle plotted on the chart now. Let's name that position as point A. Okay, so any doubt up to here, beta? No, sir. Okay, very good. So this basically completes the first part of the question. They had given us two celestial position lines and they wanted us to find the position. So we have just plotted those PLs and obtained our initial position. So that was the first part of the question. The second part is a little tricky. So let's proceed ahead and see. So the first part of the question is done. They wanted us to find the ship's position, which we have obtained. We can read off the latitude and longitude of this particular position from the chart. Now in the second part, it says that we are required to make good a course so as to reach a position 3 miles due south of Old Head of Kinsale Light. So let's identify the Old Head of Kinsale Light. This is where the Old Head of Kinsale Light is. We have to go 3 miles due south of it. So I'm going to draw a line south of this in southerly direction. And on this particular line, I am going to mark off our destination position, which is 3 miles south of Old Head of Kinsale. So with my compass open 3 miles, centered at Old Head of Kinsale, I draw an arc. Wherever the arc cuts this line, the southerly line, 180 direction line, that is our destination position. This is where we want to reach. So what I do now is, let's name this point where we want to reach as Eco. Now what I do is, I will join this alpha and Eco points. So let's join these alpha and Eco points. Now this line, which is joining my initial position alpha with my destination Eco, basically is the course which I should be making good. This is the course made good line. So let's mark it off with the double arrows. Course made good is represented by double arrows. So you can see the double arrows marked on the chart. The current is provided to us. Set and drift of the current is provided to us in the chart. So the set and drift of the current, estimated set and drift, is 145 and the rate is 2 knots. So what I'm going to do now is,
starting from point A, that is my initial position, I am going to make my course distance and current vector triangle for 1 hour. So from point A, I am going to mark off my current vector for 1 hour. The direction will be 145 and the length would be 2 nautical miles. So let's plot it on the chart. You can see the current vector plotted here. Let's mark it with 3 arrows. So we have the marking for the current vector, the point where the current vector ends. Let's name this point as Bravo. So you see now alpha to Bravo is our current vector for 1 hour. Now we also have our engine speed, which is given in the notes in the question paper. So our engine speed for this particular question, for this particular assignment is 12 knots. So I'm going to mark my CTS vector now. The length of the CTS vector will be my engine distance for 1 hour, which is 12 miles. So what I'm going to do is I'll open up my compass equal to 12 nautical miles, which is my engine distance for 1 hour. Center the compass at point B, where current vector is ending, and make an arc so that it cuts my course made good line, that is alpha eco green color line. So let's cut it. You can see the arc on the chart now. So compass is centered at point B, the radius is 12 miles, and this arc is made. It cuts the course made good line at a particular point. Let's name that point as Charlie. So now I'm going to join Bravo to Charlie. So let's join it. So we have this line joining Bravo to Charlie. This Bravo to Charlie is basically my course to steer vector. So this is represented by a single arrow. So let's mark the single arrow here. So Bravo to Charlie is my course to steer vector for 1 hour. So if we have this current in the area, that is 145 with a rate of 2 knots, and we steer this particular course, that is Bravo to Charlie course, we should be reaching at our destination. So the second part of the question is complete. They wanted us to make good a particular course so that we reach up to this destination position eco. So we know what course do we need to steer. Align your parallel ruler with Bravo Charlie, take it to the nearest compass rose, and you can read off the course to be steered. Okay, so beta, any doubt up to here? No, sir. Very No, good. sir. Very good. So what have we done here, beta? We have allowed for the current, or we have counteracted the current? Counteracted. Very good, beta. Very good. So we have counteracted the current. Beta, all this what we have done till now is basically done, or was basically done, when there was no GPS and we wanted to proceed on a passage. So we calculated what course we should be steering. This was before we start off on our passage. Right, the vessel is at this particular position where two celestial PLs have intersected. So we want to proceed ahead from here. To find out which course we should be steering, we used to do this exercise on the chart. So once you do this exercise, you make this 1 hour course distance and current vector triangle. You can find out which course you should be steering, and then you will start to proceed. So all what we have done till now is done before we start our passage.
Okay, we were at this particular position. Once this much is done, now we can start on our passage. We know what course is to be steered. We will order the helmsman or put it in the autopilot, and the vessel will start to move. So now we will see the next part of the question. बेटा अगर कहीं पे ब्रेक लेनी हो तो ब्रेक भी हम ले सकते हैं. If it is getting overloaded, just tell me, then we will take a break there. But I would recommend we complete this question. So एक बार ये complete हो जाएगा, then we go for a break. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. No problem, sir. We continue. Okay, sir. Sir, इसमें एक चीज पूछना है. From the above position, it is required to make good a course. So, sir, the wording in the question is make good a course, and we have to find the course to steer. तो सर ये थोड़ा क्लियर कर देंगे. ओके ओके ओके. देखो बेटा, हमारी रिक्वायरमेंट है टू मेक गुड ए कोर्स. दैट्स व्हाट इज रिटन. आवर रिक्वायरमेंट इज टू मेक गुड ए कोर्स टू रीच अवर डेस्टिनेशन. करेक्ट. सो अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, then course made good is plotted on the chart. We have it plotted. We have our destination. We have our starting position. It is plotted on the chart. So to make good this particular course, we need to steer a particular course. So हमारे आंसर में ये दोनों चीजें आ जाएंगी. We will write down what is the course made good which we are required to make good, and what is the course which we need to steer so that this will be done. ये दोनों चीजें हम अपने आंसर में लिख देंगे. उन्होंने यहाँ पूछा नहीं है, उन्होंने यहाँ सिर्फ ये लिखा है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक गुड ए कोर्स टू रीच ए पोजीशन 3 miles साउथ ऑफ दिस लाइट. बट वंस वी मेक दिस प्लॉट, तो ये दोनों की दोनों चीजें हम अपनी आंसर शीट में लिख देंगे. ओके सर. ओके. So shall we proceed ahead now, beta, to the next part? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. All right. So whatever we have done till now, practically on board this is done before you start to proceed on the leg of a passage. We have to find out what course do we need to steer so as to reach our destination. See, all these things which we are doing, they are basically applicable to the scenario when we do not have any GPS or satellite position fixing. With GPS, we monitor our position on a second-to-second basis. But when there was no GPS, this was the routine procedure which we used to follow. Nowadays, we don't do this calculation to find out what course should be steered. We can easily check it from our GPS. What course do we need to steer so that we maintain our intended track? Before GPS, this was the procedure which we used to follow. So before we started on any leg of the passage, we used to find out what course we should be steering so that we make good this particular track. Now, once the CTS is found using this method, by making the course, distance and current vector triangle for 1 hour, the vessel can now proceed on its passage, start to move on its passage. So after you have obtained this course steered, the vessel has started moving from point A now. So it started moving from point A, and the next fix which was obtained was after 2.5 hours. So after 2.5 hours, we came to know that the vessel is at this particular position, that is 5130 north and 00830 west. So let's now mark off this position which was observed after 2.5 hours. Let's mark it on the chart. Now this position comes to be here in this location. That's 5130 north and 00830 degrees west. So this is our fix. Let's name this as point F, and this is the fix obtained after 2.5 hours. Now we want to find out what was the actual set and drift of the current. Now beta, you can see
that if our estimated current was correct, then we should be somewhere on the course made good line. But our fix, the position which we have observed, is not there. It is not on our course made good line. The position is here at point F. Now, why has this happened? This has happened because the current which we estimated in the beginning was not the actual current. See, the estimation of current is done basically from either the routing charts or the information given in the sailing directions or the weather reports which we receive. So the estimation is made basis these factors. However, the actual current in the area may differ from the estimation. So it is because of this difference that we are not on our intended track. We have drifted off. So how to find out the actual set and drift of the current now? So for this, we are going to make a 2.5 hour course distance and current vector triangle. So starting from point A, that is my initial position, I'm going to make this 2.5 hour triangle. I know the course which I was steering, that was Bravo Charlie. I know my engine speed, that is 12 knots. So I will draw this course for a duration of 2.5 hours starting from point A. So starting from point A, I'm going to mark off a vector in the direction of my course steered. So let's have this vector on the chart. We have this vector, that is the course steered vector, and I'm going to cut off the length of this vector equal to my engine distance for 2.5 hours. So you can see this arc here with a speed of 12 knots in 2.5 hours, I would have covered 30 miles. So keeping my compass centered at A, opening it up 30 miles, I mark off this arc. This is the end of my CTS vector. CTS is represented by a single arrow. So I have marked a single arrow on the chart. Now the point where the CTS vector ends, let's name this as point delta. So alpha to delta is my course steered vector for 2.5 hours. Now what I'm going to do is I'm going to join this delta with my fix, that is F. So let's join. So we have this line here, delta to Foxtrot line. I was expecting to be here if there was no current at point delta, but I'm actually at point F. So this difference between delta and Foxtrot is basically the effect of the current. Beta, let's finish off, then I'll take all your doubts. That's only one side. You just know, say if there is no current, but still we have current. If we have the current of 2.5 knot, we should be at D now with that current only. Say again, beta. So just now you said that if we have no current, then Right. we should at point D. But we have calculated from A na alpha. We already apply the current on alpha. So that is a CTS na. So if we have current 2.5, then we should be at point D. Okay, I will clarify बेटा. मैं अभी बताता हूँ आपको. देखो, अगर तो इस एरिया में कोई भी करंट ना हो, there is no current at all, neither the estimated current nor the actual current, कोई भी करंट नहीं है, और मैंने पॉइंट ए से ये ब्लू कलर का ट्रैक स्टीयर करना शुरू कर दिया है, तो आफ्टर 2.5 hours I will be at point delta. Is that correct? Yes, sir, correct, sir. Okay. If we have current, then अगर, we have somewhere on right. अगर इस एरिया में एस्टिमेटेड करंट है, एस्टिमेटेड करंट जो मैंने पहले लगाया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दैट्स 145 and 2 knots.
अगर एस्टिमेटेड करंट है देन आई वुड बी समवेयर ऑन द ग्रीन कलर लाइन अल्फा इको, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। Right, sir. Right, sir. और अब जो एक्चुअल सिनेरियो है, आई एम नीदर एट पॉइंट डी नॉर समवेयर ऑन द ग्रीन कलर्ड लाइन अल्फा इको, आई एम एट पॉइंट एफ. So now I am going to find out what the actual current is, because मुझे point F पे कौन लेके आया है, actual current what is prevailing in the area that has brought me to F. सर ये इंजन स्पीड कहाँ से ले सर? इंजन स्पीड जो कर ले रहे हैं हम 12 नॉटिकल माइल, 12 बेटा नॉट। असाइनमेंट के ऊपर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। हाँ ये सब वेरिएशन दिया हुआ है, Just see those notes, you will find the engine speed there. Okay. मिल गई बेटा? ओके। MMD पेपर में भी एग्जैक्टली ऐसे ही इंजन स्पीड दी होती है, सो दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट एग्जैक्टली सेम इन द असाइनमेंट so that you get familiarized with the format. MMD एग्जाम में भी 90% of the question the engine speed is picked up from there. कुछ एक क्वेश्चंस में हो सकता है ये आपको इंजन स्पीड क्वेश्चन के अंदर ही बता दें. So if it is mentioned in the question itself, then you pick that speed. Otherwise, if it is not mentioned in the question, you pick up the speed given in the notes at the beginning of the question paper. Okay, beta, clear? Sir, just one question. So question is clear. Everything is clear. So just wanted to ask, this is an estimation, right? Because if the current was estimated, what CTS we got, that is also estimated, right? Exactly, beta. That's right. When you start moving on a track, you are moving on a estimated current on a estimated course steered. So I mean to say the final current which we are getting from the estimated CTS, which is we don't know that whether it is correct or not actually correct. Okay, मैं बताता हूँ बेटा. Right, sir? देखो आपने जब पहली ट्रायंगल बनाई थी, that is अल्फा ब्रेवो चार्ली, तो आपने CTS को एस्टिमेट किया था, right? Yes, sir. Yes, sir. With Now the help once of you, estimate current. yes, with the help of estimated current. Now once you estimated it, let us say आपका CTS आ गया 310. अब आपने जब इसे एस्टिमेट कर लिया, तो अगला स्टेप आप क्या फॉलो करोगे? आप इस कोर्स को अपने ऑटो पायलट में या हेल्थमैन को बोल के स्टीयर करना शुरू कर दोगे, Yes, sir. राइट? हाँ जी सर, वो तो उस पे So करेंगे, फिर 2.5 घंटे का जितना पोजीशन आएगा उसको इंजन स्पीड से कट कर देंगे, और जो Right. एक्चुअल आया उन दोनों में जो डिफरेंस है वो करंट की वजह से है. सर सिर्फ वही था कि लाइक जो CTS है वो ये भी एस्टिमेटेड ही है ना, लाइक समबडी वाज आस्किंग मी आल्सो, मैं लाइक बताता ये तो हूँ. हम. यस सर. देखो जो ब्रेवो टू चार्ली वेक्टर आपने बनाया था पहले 1 घंटे की ट्रायंगल में, उसमें आपने CTS को एस्टिमेट किया था, लेकिन एस्टिमेशन के बाद आपने उस CTS को फॉलो किया, और जो 2.5 आवर के लिए आपने अल्फा टू डेल्टा ब्लू कलर का वेक्टर बनाया है, वो एस्टिमेटेड नहीं है, वो एक्चुअल कोर्स स्टीयर्ड है जो आप 2.5 घंटे के लिए स्टीयर कर चुके हो. ठीक है सर, ठीक है. There is no estimation in alpha to delta now. That is the actual course steered for the last 2.5 hours. यस सर. बट सर वो जो हम CTS निकाल रहे हैं वो तो एस्टिमेटेड करंट से ही निकला है ना? Yes, that's right. तो अगर हमारा एस्टिमेटेड करंट ही सर वो बोल रहे हैं कि करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो एक्चुअल CTS निकला है तो वो कैसे करेक्ट होगा सर? Okay. बेटा CTS 310 let us say एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने एस्टिमेट कर लिया, ठीक है. अब हमें पता है कि इस 310 में हो सकता है हम अपनी डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन पोजीशन पे पहुंचे या ना पहुंचे, बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड कोर्स स्टीयर्ड, करेक्ट? यस सर. राइट. अब बेटा आपने जब वो एस्टिमेटेड कोर्स स्टीयर निकाल लिया, तो आप उसे फॉलो करना शुरू करोगे, ऑटो पायलट में 310 डालोगे, आपका शिप जो है ये 310 पे चलना शुरू कर देगा. अब जो एक्चुअली 2.5 आवर के लिए आपने स्टीयर किया है, उसमें तो कोई एस्टिमेशन नहीं है ना बेटा, वो तो आपने 310 ही स्टीयर किया है अल्फा टू डेल्टा जाने के लिए. ओके सर. ओके.
When you find it, you use the estimated current, but after you find the CTS, then you start moving on that CTS. Then there is no estimation in that. आप 310 पे 2.5 घंटे के लिए मूव कर चुके हो. Clear बेटा? Is it clear now? सर एमएमडी क्वेश्चन में अगर करंट एस्टिमेटेड है तो वो हमेशा मेंशन किया होगा, राइट? एस्टिमेटेड या फिर ट्रू, जो भी करंट की डायरेक्शन है. Yes, it is mentioned, but even if it is not mentioned, from the question itself you will be able to find कि आप इसमें कोर्स टू स्टीयर एस्टिमेट कर रहे हो या अपना जो स्टीयर कोर्स किया है आपने एक्चुअल कोर्स स्टीयर्ड उसे अप्लाई कर रहे हो. आपको बिना उसके मेंशन किए भी पता चल जाएगा when you look at a question. तो सर एक और चीज बताना सर, ये सर जो करंट होता है वो DR2 फिक्स होता है, करेक्ट सर? That's right. अगर सर EP2 फिक्स होगा वो भी करंट ही कहलाएगा या कुछ और? ओके बेटा, जो एस्टिमेटेड पोजीशन होती है ना, एस्टिमेटेड पोजीशन वो करंट लगाने के बाद आती है. जैसे ये जो ई पॉइंट देख रहे हो ना आप, ई पॉइंट, करेक्ट सर. इसको हम लोग एस्टिमेटेड पोजीशन बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड? बिकॉज ये एस्टिमेटेड करंट के ऊपर बेस्ड है. ये तो ई तो सर वो फिक्स ही होगी ना एक हिसाब से. उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे हमें 3 माइल्स पे पहुंचना है, वहां जाके तो हम फिक्स आएगी ना. नहीं बेटा, फिक्स नहीं हुई. सी पॉइंट हो गया एस्टिमेटेड पोजीशन. फिक्स वो होती है जहां पे आप वेसल की पोजीशन को फिक्स कर देते हो बाय ए ऑब्जर्वेशन. नहीं वहां पे सर है ना सर, फ्रॉम दैट अबव पोजीशन वी आर रिक्वायर्ड, उस पॉइंट से 3 माइल ऑफ साउथ, उसकी बेयरिंग है, रेंज है, वो तो फिक्स हुई ना सर. बेटा फिक्स हम किसी भी पोजीशन को नहीं बोलते. जो हमारी टारगेट पोजीशन होती है उसे फिक्स नहीं बोलते हैं. फिक्स हम उसे बोलते हैं जिस पोजीशन को हम लोग ऑब्जर्व करके फिक्स करते हैं. हमारा शिप तो ई पे अभी भी नहीं पहुंचा. हाउ कैन ई बी द फिक्स? ई इज आवर टारगेट. डिड यू गेट इट बेटा? नहीं अभी पर्टिकुलर सर हमारा वेसल उस टाइम पे नहीं है, बट इन फ्यूचर जब होगा, वहां से जब हम बेयरिंग और रेंज लेंगे तब वो फिक्स ही होगा ना सर. बेटा अगर शिप वहां पे पहुंच जाए और आप अपनी पोजीशन को फिक्स करो बाय ए ऑब्जर्वेशन एंड यू फाइंड योर शिप इज देयर, तो वो फिक्स बनेगी. करेक्ट. उसके पहले वो फिक्स नहीं है. उसके पहले वो हमारा टारगेट है. हमें पहुंचना है वहां पे. फिक्स वो पोजीशन होती है जहां पे शिप की पोजीशन को फिक्स किया जाता है बाय एन ऑब्जर्वेशन. ठीक है सर. सो इस पूरे प्लॉट में एक ही फिक्स है, वो है पॉइंट एफ. इसीलिए हमने सर्कल मारा है वहां पे, और कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है. ओके बेटा, क्लियर? क्लियर सर. और वो भी बता दो, ईपी से फिक्स में हम करंट अगर उसको मेजर करेंगे वो क्या होगा सर? ओके वो कुछ नहीं होगा बेटा, वो कुछ नहीं होगा. एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड उसकी हमें कोई यूटिलिटी नहीं है. पर अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं. ओके लेकिन एक वार्निंग के साथ बताता हूं कि अगर ये ना समझ में आए तो इसको बिल्कुल भूल जाना. ठीक है सर. ओके ईपी टू फिक्स अगर आप निकालते हो वो होगा डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड करंट एंड द एक्चुअल करंट. तो इस क्वेश्चन में तो सर हमारा फिर इस हिसाब से तो वही होना चाहिए ना. उन्होंने पूछा हमारा एस्टिमेटेड इतना और एक्चुअल कितना. उन्होंने डिफरेंस नहीं मांगा बेटा, उन्होंने एक्चुअल करंट मांगा है. समझ गया तो समझ. ओके ओके अंडरस्टूड सर. ओके अब बेटा जिसको भी ये चीज ऊपर से निकल गई या नहीं समझ में आई वो इसके बारे में भूल जाओ. फॉरगेट अबाउट इट. इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर. ओके ओके अब मैं इसको कंप्लीट कर दूं बेटा क्वेश्चन को. यस सर. ओके we are stretching up on our first session, but don't worry, इसके बाद I'll give you sufficient time. So let's complete it. So this delta to foxtrot basically gives me the set and drift of the current for the same duration, that is 2.5 hours.
So delta to foxtrot is the actual set and drift of the current which we have experienced. So delta to foxtrot is the actual set and drift for 2.5 hours. Alpha to delta is the course steered and the engine distance for 2.5 hours. Now, if they would have asked us also find out the actual course made good by the ship, that also could have been easily found if you join alpha with foxtrot A to F. This would give us the actual course made good by the ship. So this 2.5 hours triangle which we have made here is the actual triangle which has taken place. The initial 1 hour triangle Alpha Bravo Charlie which we had made was a estimation. It was a estimation triangle which we made to find out what course we should be steering. So this completes the question. We have found out whatever was asked to us. ओके सो अब बोलो बेटा, और कोई डाउट माइंड में अगर रह गया हो तो लेट मी नो. सर जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये ऑल्सो फिक्स है ना ये भी? यस बेटा, दो सेलेस्टियल पीएल इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो दैट्स ए फिक्स. Okay, I said only one fix is there. You are right, beta. There are two fixes. One is point A, another is point F. सर ये जो सेट एंड ड्रिफ्ट आएगा वे 2.5 आवर्स के लिए आएगा ना, करेक्ट? तो मतलब जो आंसर आ रहा है, यस, दैट्स व्हाट आई माय डाउट इज. Right, beta. This set and drift will be for 2.5 hours. इस क्वेश्चन में तो उन्होंने सेट एंड ड्रिफ्ट ही पूछा है. अगर उन्होंने हमें सेट एंड रेट पूछा होता तो हम ये जो डेल्टा फॉक्सट्रॉट डिस्टेंस आया इसे चार्ट से मेजर करते एंड इसे 2.5 से डिवाइड कर देते. सो दैट वुड गिव अस द रेट ऑफ द करंट इन द एरिया. सर उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो पहले वाला जो सबसे पहले A to B लगाया हुआ उसे भी ऐड करना पड़ेगा फिर बाद में? नहीं बेटा, A to B वाला बिल्कुल छूट गया है. अब 2.5 घंटे की ट्रायंगल में A to B वाले करंट का कोई भी रोल नहीं है. ओके, मतलब अगर रेट पूछा हो तो सिर्फ 2.5 से डिवाइड कर देना है. दैट्स राइट. ओके सर, थैंक यू. सर पेपर में जब ये डायग्रामेटिक बनाना है चार्ट्स पे, सर ये ऐसे ही लिखना है उस पे, लाइक ये एजिमथ ऐसे सब लिखना है सर? ये 3 माइल्स अवे 4 माइल्स अवे ये लिखने की जरूरत है या सीधा ही प्लॉट कर सकते हैं सर? नहीं बेटा, ये लिखा है मैंने सिर्फ आपकी नहीं, यहाँ के लिए नहीं सर, ये वाला नहीं सर. जो इनिशियल हम डीआर पोजीशन था उसके बाद हमारा एजिमथ था, फिर ये इंटरसेप्ट अवे टुवर्ड्स जो होता है सर, वो पॉइंट्स लिखने की जरूरत होती है, लाइक 3 माइल्स अवे 2 माइल्स ऑफ ऐसे करके? नहीं बेटा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम जो भी चीज़ को चार्ट पे शो करते हैं वो सिंबल्स के साथ ही शो करते हैं. और सर जैसे हम ये इवन लेट मी फिनिश. Yes, जो ABCD पॉइंट भी मैंने मार्क किए हैं ये भी आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने लिखा है फिक्स आफ्टर 2.5 आवर्स, एक्चुअल सेट एंड ड्रिफ्ट, CTS एंड इंजन डिस्टेंस, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव टाइम, यस इट कैन बी रिटन, बट जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना, द प्लॉट शुड नॉट गेट क्लटर्ड. ओके, मार्किंग्स पूरी करनी है बेटा, मार्किंग्स नहीं छोड़नी है. मार्किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल एरो, डबल एरो, ट्रिपल एरो, सर्कल एंड ए राउंड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये जो लिखी हुई आइटम्स हैं इनको आप छोड़ सकते हो if you are running short of time. If you have time and you want to beautify your plot, yes, it's a good idea to write them. Okay. सर बोलो बेटा. सर ये जो सेट एंड ड्रिफ्ट निकालना है ये 1 घंटे के लिए निकालना है या 2.5 घंटे के लिए निकालना है? बेटा उन्होंने हमें 2.5 घंटे का रन दिया है, करेक्ट? आफ्टर रनिंग फॉर 2.5 आवर्स फिक्स वाज ऑब्टेन्ड एंड उन्होंने हमसे सेट एंड ड्रिफ्ट पूछा है, तो ऑब्वियसली इट इज फॉर 2.5 आवर्स ओनली. अगर उन्होंने 1 घंटे का पूछना होता तो वो यहाँ पे हमें सेट एंड रेट बताते. ओके ठीक है सर. एक चीज और क्वेश्चन में
बेटा। सर ये जो डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में कोई चीज रब करनी है जो, जैसे आपने ये पूरा बना दिया, यही सेम बनाया है, पर इसमें कोई चीज ऐसी है जो रब करनी है या सेम टू सेम पूरा शो करना है? ये पूरा शो करना है बेटा, फुल वर्किंग शो करनी है। अच्छा, नीचे वाला नीचे वाला जो एबीसी ट्रायंगल है वो रब नहीं करना है कि मतलब कि नो ऊपर नो वाला? नो 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 नो, रब नहीं करना है बेटा। हमें पूरी चीज दिखानी है कि पहले एस्टिमेशन हुई, फिर उसके बाद एक्चुअल ट्रायंगल का पता चला। ये पूरा चीज हमें शो करना है एग्जामिनर को। ओके सर, एक चीज और थी, जो आपने अभी ये असाइनमेंट का आंसर भेजा था, उसमें सेकंड क्वेश्चन में इस जो इंजन स्पीड है वो लगाई नहीं थी। तो वैसे तो हम डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे, मतलब जो सीटीएस वाला है उसको बी पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, या इंजन स्पीड को काटना जरूरी है उसमें? लेट मी सी द सेकंड क्वेश्चन बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सर। आई होप यू कैन सी द असाइनमेंट ऑन द स्क्रीन नाउ। यस सर। राइट बेटा, इस क्वेश्चन में आप देखो पार्ट बी, सेकंड का पार्ट बी जो है, फ्रॉम द अबव पोजीशन फाइंड द जायरो कोर्स टू स्टीयर एंड इंजन स्पीड रिक्वायर्ड। तो इसमें बेटा आपने इंजन स्पीड को निकालना है। We cannot use 12 knots, or we cannot say engine speed was 12 knots picking up from the notes. We have to find out what is the engine speed required to arrive at the pilot lookout light. ठीक है, तो राइट बेटा। सर, और सर सेकंड क्वेश्चन में एक और डाउट है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो आपने आंसर भेजा हुआ है उसमें सर जो आपका विंड लगा रहे हैं वो सर अलाउइंग किया हुआ है, काउंटर एक्टिंग नहीं किया हुआ है उसमें आंसर में, क्योंकि काउंटर एक्ट करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तब हमारे पास कोर्स टू स्टेयर आएगा। Okay, just a minute beta, let me see. Find the gyro course to steer and the engine speed required to arrive 1 mile south of pilot lookout light. Okay, तो इसमें काउंटर एक्ट होगा बेटा। हाँ तो सर वो उसमें तो सर वो तो शायद गलती हो गई, 49 में से माइनस होना चाहिए था 3, तो वो ऐड हो गया। Okay beta, let me see. Okay, so this is the solution which I have sent you. So he's got the 049 is what you are getting from the chart, right? Okay. And what is the direction of the wind beta? The Here? northwesterly, sir. Northwesterly. Yeah, that's right. It should be minus beta. It should be 046. सर एक चीज और थी, जो ये जो जैसे सीटीएस इसमें सीटीएस आया सेकंड क्वेश्चन में, इसके बाद अब ये दोनों ज्वाइन कर दिए, जो अपना बी पॉइंट था एंड सी पॉइंट था, ये दोनों ज्वाइन कर दिए, दैट इज सीटीएस जो एक्चुअल में चलना चाहिए। तो इसमें लीवे वाला जो ट्रैक है वो नहीं शो करना, पर ये जो ये आई है, एक मैं जो पूछना चाह रहा था, लीवे का स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता क्या सर? That's right beta. We do not consider any effect of wind on the speed of the ship as far as chart work is concerned. अच्छा, इस मतलब वैसे तो पड़ता है पर इसमें नहीं पड़ेगा। Right, practically तो पड़ेगा ही बेटा, practically not as much as current. Current is going to affect your speed substantially. Wind का speed पे effect current के comparison में बहुत कम है, पर कुछ ना कुछ effect तो होता ही है। But as far as chart work is concerned, chart work में हम लीवे का अपनी स्पीड पे कोई भी इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं, नॉट कंसिडर। तो लीवे वाला जो है उसको चार्ट पे नहीं दिखाना, उसको सिर्फ कॉपी में दिखाना है कि इतना कोर्स है तो इसको माइनस करके ये कर दिया। चार्ट पे कुछ शो नहीं करना, जो अपना सीधे करंट के बाद आया, जैसे ईस्टर्ली करंट लगने के बाद ये जो आ गया, दैट इज द फुल, मतलब बस इसी पे आंसर आ जाएगा कि 10.8 या 10.9 जो की स्पीड आई है। दैट्स राइट बेटा। ये जो आपको मिलेगा, जो ये आपको चार्ट से मिलेगा, दिस इज योर लीवे ट्रैक और इफेक्टिव कोर्स। इसको आप यहाँ से रीड आउट कर लोगे कंपास रोज से और अपनी आंसर शीट में लिखोगे। अपनी आंसर शीट में आप इस पे लीवे एंगल अप्लाई कर दोगे, और लीवे एंगल अप्लाई करने के बाद आपको CTS आंसर शीट पे ही मिल जाएगा। वो सारा काम हम आंसर शीट पे ही करते हैं। We do not usually show the leeway angle on the chart. तो सर जो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो ये ट्रैक आया, ये लीवे ट्रैक आया ना, बिकॉज सर हमारा करंट विंड जो हमारी उधर नीचे से है, राइट सर?
That's right. Wind राइट you सर? said northwesterly wind ना? नॉर्थ वेस्टर्ली है सर, तो ये कम हो जाता, लेकिन हमारा इस पे आया लाइक 049, अगर लीवे लगता तो 046 होता, तो तो हम और दूर चले जाते। तो अभी अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ये लीवे ट्रैक हुआ ना सर, राइट ना? जो बेटा अगर विंड उस एरिया में प्रेजेंट है, तो हाँ जब जी, भी आप ये कोर्स डिस्टेंस और करंट वेक्टर ट्रायंगल बनाओगे, हाँ जी सर। इस ट्रायंगल से जो आपको मिलेगा वो हमेशा लीवे ट्रैक या लीवे इफेक्टिव ट्रैक कोर्स होगा। है ना? हाँ ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। हाँ अब जी, हाँ जी। CTS निकालने के लिए आपको लीवे काउंटरएक्ट करना है। सो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है, दैट मीन्स द विंड इज लाइक दिस। सो इसको काउंटरएक्ट करने के लिए यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स द विंड, यस सर। तो हाँ, राइट? तो ये कम हो गया, हाँ जी। सो आपका जो जो CTS आएगा, हम्म, ये 049 था, 3 डिग्री लीवे है, तो ये 046 हो जाएगा बेटा। हाँ जी सर। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दैट्स सर राइट। मैं अभी इसको करेक्ट सेम भी कर मिस्टेक देता हूँ सर, यहाँ पे। एंड सर इस और क्वेश्चन थर्ड में जैसे क्वेश्चन में भी इन्होंने सर, इस क्वेश्चन में सर इन्होंने 7.5 करंट 2.5 घंटे के लिए बनाया सर, इन्होंने चार्ट पे इन्होंने अब 2.5 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे नहीं हो? सर, सर यही क्वेश्चन नंबर इसी 2 वाले, की। ओके। इस क्वेश्चन में जो आपने चार्ट पे से बनाया जिन्होंने, उन्होंने सर करंट जो है वो 7.5 लाइक 2 घंटे का लगाया, आई थिंक सो 2-2.5 घंटे का। सर हम इसको राइट। सिंगल 1 आवर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं ना? मतलब मैं ट्राइंगल बेटा 1 आवर के हिसाब से बना के उसके साथ से फिर एसएमजी काउंट, एसएमजी तो मुझे मिल ही जाता है, उससे मैं सीटीएस निकाल के मैं काउंट कर लूँ सर। मैथमेटिकली यस बनाया जा सकता है, बट नॉट रिकमेंडेड। छोटी रिकमेंडेड है क्यों वो, नहीं है? छोटा है क्योंकि करंट का साइज। जितना बड़ा ट्रायंगल आप बनाओगे, हाँ जी सर। आपकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके सर, सो ठीक है। 1 घंटे का भी बनाया जा सकता है, वेरी मच इट कैन बी मेड, बट उससे बिकॉज सर, एक्यूरेसी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी। सो इट इज़ बेटर यू मेक इट फॉर 3 आवर्स, सॉरी फॉर 2.5 आवर्स। ओके सर, ठीक है। ओके, ठीक, हाँ, ठीक है अगर सर। जो कभी थर्ड ऐसा हो, क्वेश्चन है, अगर कभी ऐसा हो कि आप ये पूरा प्लॉट बना रहे हो एंड यू सी दैट इट इज इंटरफियरिंग विद अनदर क्वेश्चन और देयर इज नो स्पेस और हाँ यू जी आर सर। गेटिंग क्लटर्ड, यू बिकॉज कैन सर मेक ए मेरे 1 वाले आवर केस में क्या ट्रायंगल हो रहा था सर, आल्सो। जब वो लास्ट में लाइट हाउस जुड़ता है ना, तो सर ये दोनों लाइन ना मेरी मर्ज हो जा रही थी, तो वो मतलब अजीब लग रही थी दिखने में। तो सर मैंने इस पे करंट 1 घंटे का लगा के, मेरे पास स्पीड मेट गुड था, उसको कट करके करंट से उसको अटैच कर दिया, तो मुझे सीटीएस की स्पीड मिल गई। सर फिर मैंने उसको मतलब 2.5 घंटे इंटरपोलेट करके लिख दिया कि इतना इतना वैल्यू है। स्पीड में कुछ कट कर दिया मतलब समझा नहीं। भाई देख, तेरे पास 2.5 बेटा घंटे का। मत समझाओ बेटा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मत समझो बेटा। 2.5 घंटे का ट्रायंगल बनाओ, मत ठीक है समझो सर। 1 घंटे का ट्रायंगल, नो यूज। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है बेटा, हाँ जी, हाँ उसको जी। भी मैंने बोल दिया है कि 2.5 घंटे का बनाना बेटर है, ठीक है डोंट सर, गो इनटू 1 आवर। ठीक है सर। ओके, और सर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी सर सेम ही मिस्टेक है, उसमें भी काउंटरैक्ट नहीं किया हुआ है, उसमें भी अलाउ किया हुआ है, ओके, 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 बल्कि उसमें भी सेम है। काउंटरैक्ट करना है उसमें। सर यस उससे सर, और पहले सर, सर और अगर हम सर ये जो एक डेविएशन बनाते कार्ड है ना, हैं वो डेविएशन 2 लिखा हुआ है, वो डेविएशन कार्ड की 1 की वैल्यू है। ओके, वो कल 1.5 घंटा परसों इसमें खराब हो गया। मैंने कहा डेविएशन 1 ही से तो आंसर आ रहा है, पर डेविएशन 2 लिखा हुआ है। चार्ट वर्क की जो पीछे बुक है उसमें डेविएशन 1 का ही पूरा डेविएशन 2 है। बट बेटा ये बताओ, ये जो सोल्यूशन मैंने भेजा है ये तो नंबर 2 से है ना? सर मतलब जो नंबर 2 की जो वैल्यूज है ना डेविएशन कार्ड की, जो आपने पीडीएफ भेजी थी, हाँ हाँ, वो नंबर 2 लिखा हुआ है, उसमें 4 डेविएशन कार्ड बने हुए हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सेम करके भेजा हुआ है, पर एक्चुअल में 3 डेविएशन कार्ड है, और नंबर 1 जो डेविएशन कार्ड है उसकी ही वैल्यू 2 बार कॉपी कर रखी है। तो मैंने चार्ट वर्क की किताब से किया था, तो 2 से कर रहा था, तो वो तो एरर ही मेरा 334 जो पहला क्वेश्चन था, जैसे 334 जो आया। एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। यू आर सेइंग कि जो मैंने आपको डेविएशन कार्ड भेजा है उसमें 1 and 2 सेम है? हाँ सर। एक मिनट, लेट मी चेकअप बेटा। Just give me a minute. ओके, ये रहे बेटा कार्ड जो मैंने आपको भेजा है, राइट? यस सर।
अब बेटा इसमें तो डिफरेंस है, देखो 020 पे 5.3, मैं जो कहना इट इज चाह रहा हूँ, 5.6। एक मिनट सर, मैं आपको दिखाता हूँ सर। जो चार्ट वर्क की किताब है उसमें डेविएशन 1 जो कार्ड है। बेटा तुम चार्ट वर्क की किताब वाले डेविएशन कार्ड में क्यों जा रहे हो? क्योंकि मेरे को लगा कार्ड, ये कार्ड तो सर सेम होगा, तो मैंने इसको खोल के करना चाहा तो नहीं डेविएशन। बेटा, मैंने जो असाइनमेंट तुम्हें भेजी है इट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेविएशन कार्ड, सो मैंने इसीलिए तुम्हें ये असाइनमेंट के साथ ही भेजा है। ठीक है सर। ओके, होप इट इज क्लियर। और सर आपने जो सर ये सोल्यूशन भेजा है ना सर, हाँ हाँ उसमें सर जो नंबर 1 क्वेश्चन है ना, उसमें जो कंपास बेयरिंग को करेक्ट करने के लिए, कोर्स कंपास बेयरिंग को करेक्ट करने के लिए सर लिया है ना, उसमें सर डेविएशन उन्होंने गलत लिया होगा। ओके, सो उन्होंने फर्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन, डेविएशन हाँ इज जी, रॉन्ग। हाँ नहीं सर, हाँ जी आप कीजिए सर। जो कंपास बेयरिंग सर निकालते हैं ना सर, जब हम कंपास बेयरिंग जो लिखा है ऊपर, हाँ जी सर, ये डाउन कीजिए सर थोड़ा सा। हाँ सर, ये कंपास बेयरिंग 350 लिखा है ना सर कंपास, राइट, इसमें सर डेविएशन 10.8 नहीं है सर, ये डेविएशन डिफरेंट है सर, 0.5 है 0.5 है सर। वेस्ट। डेविएशन तो उसके बेटा लिए लेंगे ना, एक कोर्स के मिनट लिए बेटा, लेंगे, आप बेयरिंग के लिए नहीं 350 लेंगे। पे डेविएशन देख रहे हो? हाँ सर, सर मैंने बेयरिंग तो 350। सर कोर्स पे लेंगे ना सर। ओके बेटा, होल्ड ऑन हाँ होल्ड ऑन बेयरिंग होल्ड ऑन। पे। हाँ जी सर। बेटा जो डेविएशन होती है इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द बियरिंग, डेविएशन इज डिपेंडेंट अपॉन द शिप्स हेड। हाँ ओके, ये गलती होगी सर, ठीक है सर, थैंक डेविएशन यू। इज डिपेंडेंट ऑन द शिप्स हेड विच इज 050। हाँ ठीक है सर, ये गलती होगी, ठीक है सर, ओके, ऑल ठीक है, राइट। थैंक यू। सो वेरी गुड बेटा, great. So आज we covered a lot of ground, lot of your doubts were cleared. So we stretched up on our session. It's almost 10:20, almost going to be 10:30 now. So सर अब हाँ बोलो बेटा। एक मिनट सर, जैसे इस क्वेश्चन में तो 050 अपन को कंपास वो दे रखी थी, तो उसमें डेविएशन उस पर डिपेंड हो गई, जिसमें अपने को जैसे पोजीशन निकाल दी, कोर्स मेड गुड दूसरी पोजीशन दी हुई है जिसपे कोर्स मेड गुड अपन ने खींच दिया, और उसमें अपने को डेविएशन निकालनी है पर्टिकुलर, तो उसमें तो इसी बेयरिंग पे डिपेंड करेगा या किस पे डिपेंड करेगा? बेटा बियरिंग पे डेविएशन कभी भी डिपेंड नहीं नहीं करती तो है। सर वो कैसे, फिर वो जैसे सर इसका सिंपल सा कहने का क्वेश्चन मतलब है, है सर, 3 एक बेयरिंग दी स्टार, हुई है सर। एक मिनट चेतन रुक जा, एक 2 स्टार से एक पोजीशन निकाल दी, एक लाइट हाउस है जिसकी अपने को बेयरिंग दे रखी है कंपास, और उससे फिक्स दे रखा है कि 4 माइल आर्क साउथर्ली पे कर दिया, इन दोनों को जोड़ के अपना CMG आ गया, पर वो जो 350 पे लगेगा वो किस पे लगेगा? फिर उस पे कंपास जो है उसको ट्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके बेटा, जब भी आपको कंपास बियरिंग दी होगी किसी भी क्वेश्चन में, जब भी आपको कंपास बियरिंग दी होगी हाँ सर। तो वो आपको शिप की हेडिंग जरूर बताएगा। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है सर। ओके, सो सॉर्टेड आउट। कैंसर ये वेरिएशन जो हमें नॉर्मली कार्ड में 5 डिग्री वेस्ट दी हुई होती है, हम कभी भी चार्ट से नहीं लेते हैं। नहीं बेटा, एज आई टोल्ड यू कि कुछ एक पेपर्स में, बहुत कम ऐसा होता है, पर कुछ एक पेपर में वो लिख देते हैं वेरिएशन इज टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द चार्ट। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो फिर हमें चार्ट से ही उसे कंपास रोज से पिकअप करना पड़ेगा, जैसा हमने देखा था वीडियो में, रिमेंबर? यस सर, दैट्स फाइन, वो डाउट था। ओके सेकंड सर, जैसे कि अपना ये लीवेज ऑलवेज 3 डिग्री 2 डिग्री देते हैं, इट्स ऑन प्रैक्टिकल बेसिस, लाइक हम अपने आप से एस्टिमेट करते हैं एज पर द विंड स्पीड एंड, या इसका कोई और भी तरीका टू गेट एज पर द प्रैक्टिकल ओनली, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है? ओके, सो अब हम चार्ट वर्क को छोड़ रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग इनटू ओरल्स एंड द सर्वेयर इज आस्किंग अस हाउ विल यू एस्टिमेट द लीवे एंगल प्रैक्टिकली ऑन बोर्ड ए शिप, राइट? करेक्ट सर। ओके सुनो बेटा, अब आपको अगर लीवे एस्टिमेट करना हो एक्चुअल शिप पे तो आप क्या करो, आपका शिप सेल कर रहा है, आप ब्रिज के पीछे आ जाओ, टूवर्ड द स्टर्न, लुक टूवर्ड द स्टर्न। जब आप पीछे आ जाओगे यू विल बी एबल टू सी द वेक ऑफ द शिप। यस सर। आपको शिप का वेग दिखाई दे रहा है,
वाटर में जो वेसल ने पाथ ट्रीड किया है वो वेग दिखाई दे रहा है। अब आपको अपने माइंड में अप्रोक्सीमेटली विजुअलाइज करना है, लुक टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, टुवर्ड्स द बाउ। आपको शिप की जो फोर एंड आफ्ट लाइन है उसे एस्टिमेट करना है। ओके सर, ओके। शिप की फोर एंड आफ्ट लाइन और जो वेग आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों में जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज द लीवे एंगल। दिस इज हाउ इट इज प्रैक्टिकली एस्टिमेटेड। बट सर वेक में तो जैसे वो पानी के साथ थोड़ा थोड़ा जाता ही है ना सर, साथ साथ जो पानी इंजन कट कर रहा है, जो वेक बन रहा है सर, वो पानी जो अगर पानी में जैसे करंट या जो भी होगा वो भी तो उसको सर थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा। तो एंगल मतलब विंड तो विंड है ना, उसमें तो सर पानी का तो नहीं आता ना सर। नहीं आता बेटा। लेकिन अगर सर बेटा जब सुनो, अगर अगर करंट जो है वो वेग को धक्का मार रहा है तो करंट आपके शिप को भी धक्का मार रहा है। बोथ हाँ आर जी, मूविंग ऑन द सेम ट्रैक अच्छा एज सर, फार एज द करंट इज कंसर्न्ड। ओके सर, ओके अच्छा जो सर। ये वेग की डायरेक्शन में और शिप की फोर एंड हाफ डायरेक्शन में आपको एंगल दिखाई दे रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द विंड ओनली। ओके, ठीक है, करके देखेंगे सर कभी This नेक्स्ट is, टाइम आएगा। yeah, this is a practical method which we use to estimate the leeway angle. सर बोलो बेटा। सर तो बेसिकली अपना जो विंड है वो हमारे हेड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो बेसिकली केवल हमारे कोर्स पे इफेक्ट करेगा। दैट्स करेक्ट? इट विल नॉट चेंज आवर शिफ्ट हेडिंग, इट विल चेंज आवर कोर्स ओनली। दैट्स राइट बेटा, हेड पे तो इफेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि आप अपने ऑटो पायलट से या हेल्समैन के थ्रू उतनी हेडिंग को मेंटेन कर ही रहे हो। विंड कैन नॉट यस चेंज। सर, यस सर। सर तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 050 पे अपना 90 माइनस करके और पोर्ट अबीम चेक किया था। अगर सेम क्वेश्चन में नॉर्थ से हमारी विंड रहती सपोज 5 डिग्री की, तो हमारा जो लीवे ट्रैक बनता वो 055 का बनता। और उस कंडीशन में अगर हमको पोर्ट अबीम निकालना होता तो हम 090 अपना 050 से माइनस करते हैं या 055 से माइनस करते हैं? बीम बियरिंग ऑलवेज फ्रॉम द कोर्स स्टीयर्ड। ओके ओके क्योंकि जो कोर्स आप स्टीयर कर रहे हो आपको लाइट अबीम उसी के रेफरेंस में दिखाई देगी बेटा। राइट अहेड, राइट एस्टर्न, स्टारबोर्ड बीम, पोर्ट बीम, इनकी रेफरेंस कभी भी दी जाए, इट विल ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ योर कोर्स स्टीयर्ड। लीवर ट्रैक कुछ भी होने दो, लीवर ट्रैक हैज नो बियरिंग ऑन योर रिलेटिव बियरिंग्स। सो सर उस कंडीशन में हम लोग 055 से लेंगे ना कि 050 से लेंगे? हाँ बेटा, कोर्स टू स्टीयर, वट एवर कोर्स टू स्टीयर यू हैव और वट एवर कोर्स यू आर स्टीयरिंग, आप उसी में 90 प्लस और माइनस करोगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके so I hope quite a bit of ground is covered today. Sure. Okay, so many of you were having apprehensions about chart work, so how is chart work going on beta? सर जब आप पढ़ाते हो तो इजी लगता है, जब खुद करते तो डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये बात बेटा मैं भी बताता हूँ कि जब तक आप यहाँ बैठे रहोगे इजी लगेगा। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा उसके बाद भी इजी लगे, उसका एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। तो एक अच्छी सी नोटबुक, जैसा मैंने आपको बोला है, उसमें सारी की सारी असाइनमेंट को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सैम्पल असाइनमेंट मैंने इसीलिए आपको भेजी है सो दैट यू गेट एन आइडिया हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ओके।